Good morning, everyone. I hope you all can hear me and see me. Please write yes if you can hear me and see me clearly. Good morning. Good morning. I can see a lot of you are joining in. So let's start. So the session is about the Hyundai IPO. काफी आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी सारी रील्स हैं हम लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह भी पब्लिश कर दी हैं ऑलरेडी questions. So we'll answer all these questions in this session right now with our expert, Mr. Siddharth Khemka. Good morning, Siddharth sir. I hope you can hear me. Good morning, I can hear you. I can see you as well. Welcome back, sir. It's been a while. We connected for a session. It's really great to have you. So before we begin the session, I would like to introduce everyone. Good morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. And today with me, we have Mr. Siddharth Khemka. He is a important pillar stone in the research team of Motilal Oswal. He is the senior group vice president and heads the entire retail research. You must have seen him in news channels on Motilal Oswal's social pages and sharing, multiple information and knowledge with everyone. And आज हम यहाँ पे हैं to talk about the Hyundai IPO. So sir, we have heard a lot about Hyundai IPO. काफी सारी reels हैं, कुछ तारीफें कर रही हैं, कुछ में कुछ issues भी बताए जा रहे हैं, and everyone is expecting it to be one of the biggest IPOs ever. So it will be great if you can, if you could explain why Hyundai's decision to go public is significant and how it's going to impact all our investors. Yeah, thank you, Anuj, and thank you everyone for joining in during market hours. So if you look at the Indian auto market, it has been a very significant part of the overall growth in the economy. If अगर आप देखोगे कोई भी economy जो developed बनी है, there are मतलब transportation is one of the major reasons why an economy grows, and that is why you have some of the global economists saying that ki, construction of roads is very important for the डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. जब तक आप लोग जाएंगे नहीं एक जगह से दूसरी जगह, जब तक ग्रोथ होगा नहीं. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज वन सच सेक्टर व्हिच हैज प्लेड अ की रोल in the India's economic growth story. And if you look at, unfortunately, we have had very few players इन दी लिस्टेड स्पेस. आज तक हमें सिर्फ एक मारुति जो पैसेंजर व्हीकल में मार्केट लीडर है वही लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल था. यू हैड अ टाटा मोटर्स, बट उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस है वो ग्लोबल बिजनेस है. जेएलआर जो है जैगुआर लैंड रोवर की, और इंडिया में भी दे हैव अ बिग business on the commercial vehicle side. Okay, it is only in the last few years that Tata Motors have become a large player in the passenger vehicle space. Similarly, the other player that is listed, Mahindra and Mahindra, is a large business in the tractor business, and only recently they have become a significant player in the passenger vehicle segment. So for last 20 years, India ka jo second largest passenger vehicle company, which is Hyundai Motors, had not been available to investors to invest in, while the company was growing leaps and bounds, benefiting from the India consumption story. So the listing of Hyundai will give investors a lot more choice to invest and participate in the Indian automobile growth story. Guys, please, you can ask your questions related to the Hyundai IPO in chat, and हम sessions के दौरान we'll take it live. जैसे जैसे हम अलग अलग part cover करेंगे, so we'll definitely cover that. Sir, जैसा कि आपने बताया, about the Hyundai IPO, what makes this IPO attractive for investors? Like from user point, मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या है, that is going to impact me, and why should I go? What's the most important part of it? So if you look at, as I was telling you, Hyundai is the second largest auto company in India. It has about 14.6% market share in the domestic passenger vehicle segment.
Hyundai globally is the third largest auto company. It has presence across the geographies. It has one of the leaders in terms of technology, in terms of market presence in India also. If you look at, it has made significant investments in the Indian auto space. More than 90% of the products are locally sourced or locally manufactured. So localization has been a great part of the story. So the most important point if you see is that कि जो IPO है which is 28,000 crore का IPO है. So overall, if you look at the size of the IPO, it is 27,800 70 odd crores of IPO. This is the largest IPO in India. Okay. And if you look at historically, हमेशा ये देखा गया है कि कोई भी लार्ज आईपीओ आता है, इससे पहले पेटीएम, एलआईसी, कोल इंडिया, ये सब के बड़े बड़े आईपीओ आए थे, तो मार्केट में एक लिक्विडिटी क्राइसिस का एक इशू क्रिएट हो जाता था. बट things have changed in the last few years. If you look at now, in the last 10 days, FIs have sold more than 50,000 crores of equities and still markets have not fallen the way it could have fallen. So market में जो liquidity strength है, has changed a lot. So सबसे पहला जो point है कि सबसे बड़ा IPO है, पैसा नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, ठीक है. मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है. आप आईपीओ में देखिए तो नॉट ओनली the retail, but if you look at specifically from the institutional standpoint, बहुत ज़्यादा interest और demand होता है. And this company at the upper end of the price band will be about 1.6 lakh crore market cap. So ये सीधा एक blue chip company हमको IPO में मिलती है. Generally ऐसा बहुत कम opportunities होता है इंडिया में, जबकि इतनी बड़ी large blue chip companies की IPO आए. तो इसके वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है. अब जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है कंपनी का. जो Hyundai Motors है ग्रुप, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कंपनी ग्लोबली. द कंपनी being the strong parent helps Hyundai Motors India to get support from its parents, including R&D, design, product planning, supply chain. जो Hyundai का ब्रांड है उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो नॉट ओनली ग्लोबल बट इंडिया में भी उन्होंने over the last 23 years of existence एक trust factor build किया with the Hyundai brand. That also gets a lot of benefit to Hyundai. And जो future जो है, अगर आप देखो तो automotive sector is always at the forefront of in terms of development, in terms of technological advancements. So in terms of future development, EV being a big change that the automobile sector will see. There also, so you have EVs, you have hybrids, you have alternate fuels which are coming up like hydrogen as a fuel. You have hybrids, you have जो existing है जहाँ पे आप gas based जो LNG based कार्स होते हैं, हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं और ईवीज है. इस सभी में जो प्रेजेंस है Hyundai मोटर्स का, एंड दे हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द LPG gas based hybrid based and EV based cars, and they are planning to launch 4 models in the near future in the EVs. So Creta जो उनका जो top selling model है उसमें हम in the next 2 quarters will see an EV model. So consistently if you see in terms of R&D, in terms of technological advances, the company is at the right up there and will keep launching newer products to participate in this growth story. Sir, I guess जो मेरा next question था आपने partially यहाँ पे already answer कर दिया. I was gonna ask you about Hyundai's post IPO launch growth plan and future कैसा है, what are they gonna launch, what's their overall objective. तो आपने वो part वहाँ पे ले लिया है already, but तो इसका थोड़ा part और है which I can cover. से जो कंपनी ने so the good part about the company, मतलब अभी ये थोड़ा financials आ जाएगा यहाँ पर, तो I will come to it later, but to answer your question, what are the plans? So अगले 10 साल मतलब FY23 में कंपनी ने एक 10-year प्लान बनाया था जिसके तहत कंपनी ने 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है इन इंडिया. इसमें से 20,000 करोड़ जो है इट इज गोइंग
purely and solely for the EV space, including development of EV technology, development, setting up a battery assembly plant, putting up the EV charging points across the highways. So over the next 10 years, कंपनी 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी to become a large and dominant player in the entire EV supply chain. ठीक है, so that is a huge capex that the company is going to do. इसके अलावा कंपनी है ना 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी over the next few years to increase its capacities. So कंपनी के currently 2 plants हैं चेन्नई में. अब कंपनी एक नया प्लांट है, उन्होंने एक एक्विजिशन किया है तालेगांव महाराष्ट्र में. सो चेन्नई इज अ बिग ऑटो हब इन इंडिया, and you have Maharashtra is another big auto hub which is near Pune. We have a lot of auto companies there. So if you look at there, so 6,000 crores will be invested in Talegaon, 6,000 crores will be invested in Chennai to expand their capacities. So these capacities, when they come, is only going to drive the growth for the company for the long term. So जो कैपेसिटी है अभी करंटली जो कैपेसिटी है वो है 8,24,000 यूनिट्स पर एनम का कंपनी का. तो अगले साल जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में इनिशियल कैपेसिटी आएगी, तो कंपनी का कैपेसिटी यहाँ से बढ़कर 9,94,000 यूनिट्स हो जाएगा बाय H2, and then eventually the company will cross 1 million units, which is your 10,74,000 units by the end of the capex plan. So ये सारे growth plans है कंपनी के. So they are hugely putting capacity. And now the major important point, ये जो capex है, ये total amount जो है ये इंटरनल एक्यूरल से इन्वेस्ट होएगा. कंपनी के पास कोई डेट नहीं है. कंपनी कैश रिच है, कैश जनरेटिंग कंपनी है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है. तो ये जो capex है over the next 10 years will be entirely funded through the business. Sir, generally, whenever we invest, trade, or when applying for an IPO, हमेशा risk reward की बात होती है, right? कि it should be balanced जो हमारा risk reward है. So, is there any risk in applying and investing in Hyundai, and what are the rewards which we will pay against that? Yeah, it's an interesting question. Thanks for asking it. So I'm just sharing our report that we have released today. ठीक है, so we'll get into the details of it in a while. मतलब इन्हीं में से जो pointers है मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, rational दे रहा हूँ. But the risk and concerns अगर आप देखो तो मैंने upfront दे दिया है report के starting में ही. So there are few risks. For example, being a global, having a global parent and a lot of R&D being done at the parent front. प्रोडक्ट्स वहां से आते हैं, प्लेटफॉर्म वहां से आते हैं, डिजाइन वहां पे आते हैं, तो कंपनी एक रॉयल्टी फी पे करती है. तो ये जो है ये एक रिस्क होता है. जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स घुसते हैं, तो ये क्या होता है कि कंपनी जो है अपना सो अभी करंटली दी रॉयल्टी इज एट 3.5%, विच इज इन लाइन विथ व्हाट मारुति हैज बीन डूइंग. बट ये जो है ये पिछले कुछ टाइम में 2.5% हुआ करता था. अभी कंपनी ने उसको 3.5% कर दिया है. और कंपनी मैनेजमेंट का ये कहना है कि अब ये 3.5 जो % रॉयल्टी है ये आगे जाके बढ़ाएंगे नहीं. सो दे विल नॉट इंक्रीज दिस. बट स्टिल दैट इज अ रिस्क दैट व्हेनेवर इट इंक्लूड्स, बिकॉज जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो इसे 5% तक अभी का जो करंट रेगुलेशन है लिमिट करता है. So this can go up, may not be in the near future, but whenever it goes up, it hurts the profitability of the Indian business. The other risk is that Hyundai जो है उसके parent जो है उसके 2 brands है. एक Hyundai है and they also have a big stake in Kia. Kia Corporation, Kia India is also present in India and is gaining market share. Although it's a small player right now, but basically it's a parent-owned company which is in a similar lines of business as a competitor. So there again, there is a risk कि अगर Kia will do well, तो Hyundai का market share में थोड़ा impact आएगा. I would say that it is there as a risk, but you have a lot of competition in the auto space. The who's of the world are there, and Hyundai has consistently done well. They also get benefits from these global tie-ups. कि कोई प्रोडक्ट किसी का चल जाए तो वहां से उनको बेनिफिट्स और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग वो सब भी मिल जाता है. सो यस, अ रिस्क, बट आई वुड नॉट से दैट इट्स अ बिग रिस्क. एंड देन देयर इज अनदर रिस्क इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन. जो Hyundai इंडिया है उसकी
जो प्राइमरी स्पेयर पार्ट्स कंपनी है जो जिससे वो लेता है वो है कंपनी है मोबिस इंडिया लिमिटेड, जिसमें इट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन दिस कंपनी। तो क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए they will have to increase their supply chain base. Right now, around 18% of the components are coming from this particular कंपनी मोबिस, एंड अगर उसके कोई बिजनेस इंपैक्ट होती है तो ओवरऑल सप्लाई चेन में इंपैक्ट हो सकता है। दिस इज अ की रिस्क बिकॉज इफ यू लुक एट पोस्ट कोविड व्हेन lot of these semiconductor chips were diverted towards mobile phones, laptops, तो ऑटो इंडस्ट्री को चैलेंज आ गया था कि टू सोर्स सेमीकंडक्टर्स, और उसकी वजह से जो डिमांड तो ग्रोथ थी लेकिन सप्लाई में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स में इम्पैक्ट हुआ था। तो सप्लाई चेन इज अ बिग फैक्टर फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। सर आई गेस वी हैव सम क्वेश्चंस, इट विल बी ग्रेट अगर हम उनको सेशन के बीच में ले ले। बिल्कुल, आई विल जस्ट स्क्रॉल अप। या कुछ तो basic questions हैं, like should we apply for it or not? So I guess the entire session says कि we should apply for it. So I will come to that. I will summarize my view on the subscription. It can be broken down into sub parts, but we'll come to that. I will give you the view. So right now our report says subscribe for long term. See, I'll tell you. Let me then give you answer also. आपको क्या चाहिए उसके बेसिस पे व्यू डिपेंड करता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर लिस्टिंग गेन्स देन डेफिनेटली दिस इज नॉट द IPO फॉर यू, बिकॉज बीइंग अ लार्ज IPO, lot of people who want to invest, they will get allotment in the IPO itself, so we will not see a huge buying interest after the IPO gets listed. Generally अब छोटे IPOs आते हैं, लोगों को अलॉटमेंट मिलता नहीं है, इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, HNIs जिनको उस शेयर में पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको 1% एलोकेशन मिल गया। अब उनके लिए एक कंपनी में अपने फंड में एलोकेशन 1% इज नॉट एनफ, दे विल हैव अ मीनिंगफुल एलोकेशन 2, 3, 4%। सो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर लिस्टिंग दे गो एंड बाय दोस शेयर्स, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स खुशी खुशी उनको अपने लिस्टिंग गेन्स पे हम उसको बेच देते हैं, बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लॉन्ग टर्म, वी जनरली लुक एट शॉर्ट टर्म। अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो हमें 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 अपना मिल जाता है, उनको उनका शेयर्स मिल जाता है आफ्टर IPO। बट इन दिस IPO लिस्टिंग गेन्स इज नॉट पॉसिबल। इट मे बी देयर बट इट विल नॉट बी अ ह्यूज number. So if you are purely looking from a listing gain perspective, I would say don't apply, avoid. Coming to the next question, आप long term investment देख रहे हो, so in terms of valuation, as I said, comfortable valuation compared to Maruti. If you can see the peer comparison, Maruti is trading at almost 30p, this company IPO is coming at 26p. Growth, रेवेन्यू ग्रोथ मारुति 26%, इसका 21% है, पैड ग्रोथ 45% है। मारुति का लो बेस था, इसके लिए ये परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज इन बिटवीन द मार्जिन्स हैड फॉलन फॉर मारुति 13%। एबिटा मार्जिन मारुति का है 13%, इसका है। सो इट इज देयर इन लाइन विद द इंडस्ट्री, सो वैल्यूएशंस आर कंफर्टेबल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ in the industry will be there, and you have now choice between Tata Motors, M&M, Maruti and Hyundai, right? And hence I would say that कि अगर मुझे ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है, मुझे अगले 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इनकी जो नई कैपेसिटी आएगी वो अगले साल के सेकेंड हाफ में आएगी, इनकी जो EVs लॉन्च है वो इस साल के लास्ट क्वार्टर में आएंगे, तो ग्रोथ आपको FY26 FY27 में देखने को मिलेगा। इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द ऑटो सेक्टर as a long term sector, then I would advise you to subscribe to the IPO. Otherwise आपको ये शेयर मार्केट से आराम से मिलेगा लेने को। there is no hurry, there is no such factor कि ये कंपनी मतलब नई कंपनी है, नया बिजनेस है, हमको बाद में अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। so you will get lot of opportunities. We have seen in the past even Maruti like stock struggling for 3-4 years when the stock did nothing for 4-5 years. So purely from a long term perspective, one should subscribe is the view. I guess हमारे आगे के जो 2-3 questions थे, will it be good to invest in IPO, take it from open market after listing? So ये वाले जो questions हैं we have already answered in our previous questions. Yeah. Sir, how many lots should I go with for max probability of allotments? So Anuj, again I think यहाँ पे allotment के बहुत ज्यादा chances है, यहाँ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा नहीं, तो आप
बहुत ज्यादा ग्रीडी होके अप्लाई मत करिए, क्योंकि आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है 1 या 2 लॉट्स के लिए आप अप्लाई करिए, आपको अलॉटमेंट के फेयर चांसेस होंगे। एंड as and when the company keeps reporting its numbers, I would say that if you want to make it a big portion of your, अगर आप इसको 3-4% अगर आप allocation करना चाहते हो अपने portfolio के, तो you add it over a period of time over the quarterly results when the management will be more forthcoming on the future. क्या होता है, आईपीओ में कंपनी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बोल नहीं सकती है। जितना भी इंफॉर्मेशन उन्होंने सेबी को डिक्लेयर किया होता है, जो आरएचपी होता है, जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जितना डिटेल्स होता है उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती है। बट वंस इट गेट्स लिस्टेड, दे विल बी मोर फोर्थकमिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर आउटलुक, ग्रोथ, नंबर्स। बेस्ट पार्ट अबाउट ऑटो सेक्टर इज एवरी मंथ वी गेट द सेल्स वॉल्यूम डेटा। हमें ऑटो सेक्टर का पल्स, एक एक पल्स पे हमारा बहुत ज्यादा पकड़ होता है। हम अपने आसपास देखते हैं तो भी हमें पता चलता है कि कौन सा मॉडल नया लॉन्च हो रहा है, कौन से मॉडल पे ज्यादा डिमांड है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा व्यू होता है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा दिखता है और इजी टू समझ अंडरस्टैंड है, समझ में बहुत आता है। आई वुड से अप्लाई फॉर 1 or 2 लॉट्स एट मैक्स इन द रिटेल कैटेगरी। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में डाल रहे हैं, अगेन आपको लार्ज एचएनआई कैटेगरी में डालना है तो आपको 10 लाख का मिनिमम एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर आप अदरवाइज एचएनआई कैटेगरी में है तो 2 lakhs to about 10 lakhs अगर आप डालोगे तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। Sir, also I am a new as an investor. What shall be the procedure to invest and how it goes after we get listed? So I guess I'll take this one. You can go to our MO Rise application and वहाँ पे the IPO section. It's hardly a 3-click process. It's very easy applying. 3 click including the payment. It's very easy. तो आप वहाँ कर सकते हैं. And after the allotment, it will reflect in your Demat account. And if you don't get the allotment, the amount will be refunded back to your original payment mode. आपने यूपीआई से किया हो या अपने डायरेक्ट अकाउंट से किया हो, तो it will be reflected back into your account. Sir, if IPO is overpriced, should we apply or avoid? So as I explained, IPO is not overpriced. हमने clearly आपको दिखाया है कि it is in line with the industry. At least मारुति के हिसाब से उसके financials in sync है, मतलब in line with मारुति है, और एक valuation जो है वो मारुति से discount पे है. So valuations is not expensive. If the auto sector does well, I think the company will also do well. So if I have a positive view, which I have on Maruti as well, तो मुझे लगता है यहाँ पर Hyundai पे भी हमारा इसलिए पॉजिटिव व्यू बन रहा है। सो अगर आप इसे 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है 20% प्लस CAGR रिटर्न्स यहाँ पे बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। So I guess you've taken all the queries and you have already shared a lot of information. So do we have any ending notes? So again, I will share the PDF report. What we are saying is subscribe for long term. Can you zoom in a little bit? I'm sorry to interrupt. Can you zoom in a little bit? This is better? Yeah, this is better. So IPO opens on 15th, which is today, and will be open for 3 days. Bid lot is 7 shares. The market cap post listing will be about 1,60,000 crores. At the upper end of the price band, they have already raised about 8,000 crores through anchor allotment yesterday evening. Okay, financials are pretty strong. I will take you through some of the other data points. Industry में अगर आप देखो तो the sector has they are the second largest player. They do a lot of exports. So this is the monthly annual volumes that they are doing in India. Okay. They have a wide range of models, right from hatchbacks, sedans, SUVs, EVs, compact cars, Exter, Venue. In the mid-size, they have Creta. In the large format, they have Alcazar, Tuscan. Wide range of transmission options है, automated transmission है, automated manual transmission है, dual clutch, intelligent variable transmission, manual transmission, electric engine, CNG, डीजल, टर्बो पेट्रोल। तो जो इंडस्ट्री में है वो सारे इनके पास है। 14.6% मार्केट शेयर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन इंडिया आफ्टर मारुति। एक्सपोर्ट्स में भी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर मारुति। सो इंडियन कार एक्सपोर्ट्स में दे आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 23% to the Indian exports. So they are making, the management has talked about making India as a key export hub from Asia. तो जो इंडियन यूनिट्स है
for Hyundai, this will become a key export hub. We are exporting to a lot of African countries, Middle East countries. So यहाँ से वो जा रहा है. If you look at the passenger vehicle industry, last 3-4 years, the growth has been in excess of 15%, 16% CAGR से industry growth कर रहा है. आगे चलकर भी एक steady 5 to 6% volume CAGR हमने देखने को मिलेगा. इसमें SUV segment is far outpacing growth, where we are saying कि ज़्यादा growth होगी. Company ने consistently revenue, EBITDA margins has been improved, net profitability has been pretty strong. Return ratios is at 33%, जो generally auto sector में हम देखते हैं कि बहुत strong cash flows होते हैं. So net I think businesses अच्छे हैं, management बहुत strong है, and the only issue is that कि because of the large sized IPO, you would not see a huge listing gain, but nonetheless it's a very good business, cash generating, dividend paying, strong management, strong parentage, and look at this IPO from a 2 to 3 year perspective. Sir, after the so much distribution, I guess even I have this question, and हमारे chat में भी है. Do we have any breakup on the focus of the company in terms of electric, petrol, and diesel? Like, do we have any specific distribution? So, so in terms of you're saying current sales? No, in the future जो आपने बताया, जो projections and the plans the company has. में कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है. EVs में penetration अभी कंपनी की काफी है नहीं, but if you look at एक level of penetration इंडिया में EVs में होकर अभी थोड़ा सा slow down चल रहा है, because people are not very clear in terms of the pricing, in terms of the technology, batteries, and the charging station. So I think it's the right time for some of the companies to get in. Even if you look at Maruti, which is the largest player, उनका EV में एक भी product ऐसा है नहीं. While if you look at Hyundai, they have 2 products in the EV space right now. The flagship product that they have is the Iconic 5. It's like a Tesla product, and it is priced accordingly. 50 lakh का product है, but it's like a showcase product for them. I think in future their main focus will continue to remain on the SUV platform. Okay, and once you have the platform and once you have the various engine options, be it petrol, diesel, CNG, EVs, hybrids, it becomes very easy for company to maneuver around the demand. जैसे जैसे demand बढ़ेगा, आप वैसे वैसे products को आप deliver कर सकते हो. But clear focus है future में, there will be lot more focus on EVs. As I said, 20,000 crores जो investment है, वो purely on the space of EVs होने वाली है. So that's a huge commitment from a company, and EVs is not the only thing. As I said, there are other advancements like alternate fuels. Hydrogen fuel cells as a source of energy is going to be another future development. So company is prepared to explore all these options. So I guess that's our time, and we have covered everything. And जैसा मयूर जी कह रहे हैं कि why there were no regular sessions of IPOs on Stockholm. So guys, that was a mistake at our fault, but we did around 4-5 IPO special sessions this year, and from after this IPO onward, we are starting that. You will see Siddharth sir and his entire team back in action, talking a lot about the fundamentals and the IPOs and doing some AMAs. We will be starting that once again. So that will be all for the IPO part. Guys, don't forget to join our expiry at 2:30 p.m. the FinNifty expiry. Thanks a lot, Siddharth sir. It was great to have you back once again. And thank you so much, Anuj, for hosting, and thank you all for joining in and asking the questions. Wish you all a very happy investment journey. Thank you. Thank you, everyone. See you at 2:30 p.m.